हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मैट्रिक्स। सो काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि गेट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या फिर डीएसए इम्पॉर्टेंट है फॉर गेटिंग प्लेस्ड इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चल रहा है कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सी, इफ़ यू आर इम्पेशेंट, if you are really impatient, if you cannot watch this video, and if you just want to do DSA and nothing else, then this video is not for you. But if you want to know the other side of the story, if you want to know why gate is so important, and what what are you going to get if you crack gate and if you secure a good rank in gate, so इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ. So watch till the end, and I can assure you that you are going to get the clarity, like क्यों इतना ज़रूरी है गेट, if you are from computer science, or if you are any engineering branch. तो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो सो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइक सी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, so you prepare for gate. I'm going to talk about computer science and DA mostly, right? I'm not going to talk about other branches because I'm having expertise in these branches only. So if अगर हम बात करें कि गेट क्यों ज़रूरी है, तो कंप्यूटर साइंस, इफ़ यू आर अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपकी जो कोर जो सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के, यू शुड हैव अ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दोज सब्जेक्ट्स, राइट? अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़. मतलब इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से कि आपने कुछ सीखा ही नहीं है अपनी अपनी बीटेक में, अपने ग्रेजुएशन में. सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, computer organization and architecture, so there are so many subjects. You should have a in-depth knowledge, और जब आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हो, you get this knowledge, right? And that will really help you, further in your career. Plus, जब आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हो, so it opens a wide opportunities. It opens a gateway to many opportunities for you. आपको PSUs के लिए, आप PSUs के लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट? ONGC, IOCL, there are so many PSUs for computer science also. आप बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि गेट के रैंक के बेसिस पे आपको रिक्रूट करती है. लाइक DRDO इज देयर, शॉर्ट लिस्ट करते हैं गेट के रैंक के बेसिस पे, आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे, राइट? एंड देयर आर सम अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंडक्ट करती हैं एग्ज़ाम. लाइक आई कैन टेल यू, ISRO इज़ देयर फॉर साइंटिस्ट पोस्ट, राइट? NIC इज़ देयर. सो अगर आपको वो नॉलेज है, अगर आपने प्रिपेयर किया है गेट के लिए, सो यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर सो मैनी एग्ज़ाम्स. सो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप गेट के लिए जब प्रिपेयर करते हो तो कितना कुछ आपको मिलता है, राइट? So this is just about, I have told you, for PSUs, for getting recruited in PSUs, for getting job in PSUs. But the main topic that I want to discuss here is getting admission into IITs and IISc. तो उसके लिए जब आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हो, एंड इफ़ यू सिक्योर ग्रेट रैंक इन गेट, तब आपको एडमिशन मिलता है IITs में और IISc में. तो गेट की वजह से जो आपको एमटेक करने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है IIT और IISc में, और वेरियस NITs ऑल्सो, NITs, ट्रिपल ITs, तो वो जो है वो, इट इज़ नॉट, यू कैन नॉट कंपेयर दैट. आप कंपेयर ही नहीं कर सकते उसको Tier 3 कॉलेजेस के एनवायरनमेंट से. द एनवायरनमेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट in IITs and IISc, it is totally different. I can tell you from my experience only, it is totally different. And you can just ask any IITian, you can just ask any student from IISc, you will get to know that the learning environment, that exclusive learning environment that we get here, is totally different from Tier 3 colleges. You push yourself beyond the limits. आपका करिकुलम, आपके कोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं बाय द टॉप प्रोफेसर्स, बाय द ब्रिलियंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स, कि आपको आपके लिमिट्स से ज़्यादा पुश करते हैं. एंड देन यू गिव योर बेस्ट, यू ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट. एंड उस प्रोसेस में आप जो सीखते हो, दैट इज़ that is not going, that you are not going to get in any Tier 3 colleges. I'm telling you this. So इसलिए ये, this is one of the reason that you should prepare for gate. Okay, and let me talk about some more points, very crucial points.
सी जब आप एडमिशन लेते हो आईआईटीज़ में या आईआईएससी में, सो जो कोर्सेज जो होते हैं, करिकुलम जो होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वहाँ पे आपको रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ती है, राइट? ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रट्टा मारा और एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। You have to build the projects. There are so many assignments that will be given to you. और असाइनमेंट्स इंडिविजुअल होते हैं, बहुत से असाइनमेंट्स इंडिविजुअल होते हैं, बहुत से ग्रुप में होते हैं. सो यू गेट टू नो first, in order to solve this that assignment, you have to understand each and every concept of that particular course. So जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो जो लाइव प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो, जो स्टार्टअप कल्चर आपको मिलता है यहाँ पे, that is totally different. If you see, around yourself, कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जिसके जो फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, वो दे आर IITians और मे बी फ्रॉम IISc. सो मोस्टली IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, यहाँ से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होते हैं, दे हैव देयर ओन स्टार्टअप. सो जो स्टार्टअप कल्चर है वो आपको यहाँ पे मिलता है. In every IIT, in IISc, there is E-cell also, entrepreneurship cell. तो वो जो ई सेल है वहाँ पे आप अपने आइडियाज़ पिच कर सकते हो. इन्वेस्टर्स आते हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन योर आइडियाज़ इफ दे फाइंड दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द इंडस्ट्री. सो इतना सब कुछ आपको जो मिलता है वो आप टीयर 3 कॉलेजेस में यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. So the startup culture, the e-cell department that is there, programming department, programming club is there. There are so financial club is there, which is not there in any other college, right? So इतना कुछ आपको मिलता है. You can get to know so many things if you are interested in those, right? So जो मैं बात कर रहा था जो प्रोजेक्ट्स की, जो काइंड ऑफ जो थीसिस वर्क जो आप करते हो, रिसर्च वर्क जो आप करते हो अपनी एमटेक में, अपने सेकेंड ईयर में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत से प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जिनके टाइप्स होते हैं इंडस्ट्री में. सो बहुत सारे यहाँ प्रोफेसर ऐसे, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो गूगल रिसर्च में काम कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में काम कर रहे हैं. दे आर एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल. और कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिनके पास इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं. सो कंपनी जब आती है वो अपनी प्रॉब्लम लेके आती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आती है कि वी हैव दिस प्रॉब्लम एंड वी वांट यू एंड योर स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर अस. तो वो जो लाइव एक्सपीरियंस जो मिलता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. So from my experience, I'm also working on a live project for a Bangalore based company. So in my thesis, सो वो जो आपको रियल प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आप उस पर काम कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, विद वी कैन से यू हैव टू अप्लाई द ऑप्टिमाइजेशंस कि कैसे हम उसको बेस्ट वे में डिलीवर कर सकें. और देर आर लॉट्स ऑफ रिग्रेस वर्क गोइंग ऑन व्हेन यू वर्क ऑन दोज लाइव प्रोजेक्ट्स. सो ये जो एक्सपीरियंस है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वेयर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वेयर. जो टॉप प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, जो लेक्चर्स लेते हैं, द कंटेंट दैट दे डिलीवर and kind of the exam that you are going to give here, that is also going to enhance your knowledge so much. तो अगर आप सोचोगे कि यार गेट इट्स जस्ट आप जस्ट आईआईटी जा रहे हो, इट्स जस्ट अ टैग, इट्स yes, it's a tag, very important tag, because in long term you are going to get benefit from this. Okay, what else? See, जब आप IITs में आते हो, as you have also heard that you are the average of 5 people around you, right? तो जब आपके चारों तरफ कुछ ऐसे लोग होंगे जो ब्रिलियंट माइंड्स होंगे, जो ऐसे लोग होंगे जो कुछ लाइफ में और ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, एंड दे हैव द नॉलेज, दे हैव द पैशन टू डू इट. तो वो जो एनवायरनमेंट है वो आपको पुश करता है टू डू बेटर. आर यू गेटिंग दैट? सो वो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ये एनवायरनमेंट आपको और कहीं नहीं मिलता बाहर, राइट? सो जो नेटवर्किंग जो बनती है आपकी, क्योंकि आपके जो नेटवर्क्स, जब आप आईआईटी में आते हो, देन यू पास आउट फ्रॉम दैट कॉलेज. सो उसके बाद जो आपकी नेटवर्किंग बनती है, यू नो सो मैनी IITians, यू नो सो मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम IISc, you know so many professors who are brilliant in their field, who are so, we can say, who are expert in their field. और आप ये समझिए कि यू आर जस्ट
2 or 3 persons away from the Silicon Valley also. Why I'm saying so? क्योंकि जब आप IITs में आते हो, ISA में आते हो, definitely you will be getting to know so many people here, and कोई ना कोई आपका एलुमनाई, IITs का और ISA का कोई ना कोई एलुमनाई जो होगा वो सिलिकॉन वैली में बैठा होता है. So if you are aiming for that, if you are aiming for that kind of position where you want to be there, तो उसके लिए नेटवर्किंग भी बहुत ज़रूरी है जो कि आपको यहाँ पे मिलती है. So see, there are so many benefits. I just wanted to explain each and every one of you कि आप समझिए कि गेट क्रैक करके टॉप रैंक लाके IITs में, ओल्ड IITs में या ISC में जाने का मतलब क्या होता है, राइट? It's not just about high packages. Definitely, if I talk about placement scenario, जैसा कि आपको पता है कि काइंड ऑफ रिसेशन इज गोइंग ऑन, राइट? बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी हायरिंग को फ्रीज कर रखा है, राइट? बहुत सारी कंपनीज हैं, बट स्टिल इट इज़ मच बेटर देन द आउटसाइड. सो IITs में स्टिल देयर आर कंपनीज कमिंग, प्लेसमेंट्स हो रही हैं. मैं कहूँगा कि बहुत बेटर हैं Tier 3 Tier 2 कॉलेजेस से. You need to understand this. अगर रिसेशन है, स्टिल IIT is going to perform well. IITs are going to perform well. Every IIT is going to perform well. Old IITs I'm talking about, and ISC also. So, और रही बात पैकेजेस की, right? Same company, let's say for example, I'm not going to talk about any company, but let's say XYZ is a company. That company, let's say it comes in, in the placement for Tier 2 colleges. Tier 2 colleges में आती है, and let's say they are offering 10 to 12 lakhs CTC, राइट? बट द सेम कंपनी, अगर वो कंपनी जो है वो IIT में आती है और ISC में आती है, दे आर गोइंग टू ऑफर मोर देन डबल, एटलीस्ट दे आर गोइंग टू ऑफर दैट. सो इसका तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि DSA जो है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट? DSA आपकी प्लेसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है. देर इज नो वन डिनाइंग दिस थिंग. Everyone knows that the DSA is important, but not just DSA. If you want to boost your career, right, at a higher pace, then it is very important कि आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप गेट क्रैक करके IIT में और ISC में एडमिशन लेते हैं MTech में, and when then you are going to get placed from here, it is going to give you immense push in your career. और लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग इन अ लॉन्ग रन यू विल रियलाइज इट दैट you are always getting an edge above rest of the crowd. So ये आपको समझने को मिलेगा. Even if you go in the industry after the placements, you will realize the difference there, right? जो treatment जो IITs को मिलता है, that is whole together different. Even in the promotions, if you are working well and if you are an IITian, definitely you will get an edge. So try to understand this. So मैंने बहुत सारे फैक्टर्स पे बात करी है, स्टार्टअप कल्चर, E-cell, इन्वेस्टर्स, right, and the networking that you are going to get here, that is that is totally different. And जो प्रोफेसर्स यहाँ पे हैं, जो करिकुलम यहाँ पे डिज़ाइन होता है, the courses that they offer, that is up to, I would say कि that is of the best quality. You are not going to get anywhere else. So वो environment में रहना, उस environment में सीखना, learn करना, अपने knowledge base को expand करना, right? और वो जो आपका जो attitude बनता है ना problem solving का, you are going to build it here. So बहुत ही कम लोग हैं जो सिर्फ DSA करके, if you see the data also, बहुत कम लोग हैं जो DSA करके and they get into product based companies just on the basis of DSA. There are few, I'm not saying that they are no one, but that they are less in numbers. ये समझना ज़रूरी है. But if you are an IITian and if you are pursuing MTech from IIT, definitely you have so many opportunities, if you compare with the others. And ये चीज़ भी समझना, I'm just saying from my experience, my interview experience, that I faced in Juniper Networks. So as you know that I got selected in Juniper Networks as a software engineer too. So mostly जो मेरा interview रहा, DSA, they asked DSA, but
majorly they focused on my thesis work, the project that I'm doing. Also, the varieties of projects that I mentioned in my resume. तो जो बहुत सारे projects जो आप करते हो यहाँ पे अपने courses के अंदर, you mention that in your resume and that makes a difference. And the person who is going to, if you are able to explain those projects in a lot of detail, they are keep on asking the questions. वो questions पूछते रहेंगे आपसे, and if you are able to explain each and everything that you have done in your project, that will make you stand apart, right? That will give you the edge. और उसी के basis पे I'm telling from my personal experience that I got selected in Juniper Networks based on my thesis work and the projects, the variety of projects that I have done in my courses in MTech, and plus DSA knowledge as well. So it's not just DSA, it's also based on the projects that you do. And आपको पता ही है, if you are from tier 3 college, किस type के projects आप लोग करते हो. So you know the project that we do here is totally different, and it makes an impact. It leaves the impression on the interviewer that yes, the kind of knowledge they have gained, the kind of projects they have made, that is, that is, they are not going to get the candidate from outside or from other colleges. So यही मैं आपको समझाना चाहता था कि ओवरऑल आप आपको रियलाइज हो, many people are, they are going to make you, confusion create करेंगे कि ऐसा नहीं होता है, गेट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्यों देना चाहिए गेट, why invest 1 year in your preparation. It's not like that. आपको ये समझना पड़ेगा कि what else you are going to get. You are going to get a lot of things here when you are in an IIT. Okay, so ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. DSA definitely important, but gate is also, I would say gate is more important than DSA. Okay, DSA में there are lot of crowd, right? बहुत सारे लोग DSA, हर कोई DSA कर रहा है, right? But कुछ तो आपके पास ऐसा होना चाहिए जो it is going to give you the edge over others when you are going to appear for the placement, when you are going to appear for an interview, even in the off campus scenario. तो वो जो edge है वो हमेशा आपको देगा IIT का tag, the kind of projects you have done here, right? The kind of courses you have taken here in your during your MTech. So the thesis work that you are doing here, everything is going to give you the edge over others. So I hope now it is clear to all of you why gate is so important and not just DSA. Okay, so thank you everyone, and subscribe to our channel MindMatrix, and we are going to provide you the insights of uh, how the life is there in IITs and ISC. Also, we are providing the technical content for GATE Computer Science and GATE DA. So subscribe to this channel, like this session, and share with your friends so that there should not be any misconception. Further, I don't want any misconception, among yourself. So just focus on what you want to do in your life and start doing it. Okay, and one more thing, very soon on 15th of January we are coming up. uh, Basically we have a biggest launch and surprise for all the GATE community, especially for GATE Computer Science and GATE DA. So stay tuned, and we are going to coming up with a lot of things for you. So we'll see you very soon, and keep watching, keep learning, and thank you so much. Thank you everyone. Bye bye.